अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं 𝗪𝗛𝗧𝗦𝗣𝗣 और आप देख रहे हैं SakoonSay.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 100 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आए। राइजन बिल्ड है और इसके अंदर जो है वो हमने जो कंपोनेंट यूज़ किए उनकी प्राइस अपडेट भी दूंगा, आपको स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा और इस पर जो हमने गेम प्ले बनाया उसकी भी वीडियो आपको जो है वो वीडियो के एंड पे जाके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि बेंचमार्क हमने किया है इसका। और इस बिल्ड के साथ जो इसके साथ हमने प्रोसेसर यूज़ किया और जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है उसका कम्बिनेशन कैसा रहेगा, तो ये सारी डिटेल आप वीडियो में आगे चल के देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलते हैं जी आज की 100 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली बिल्ड जो है 100 के से प्लस बन रही है, यानी कि 103 के तक बन रही है, लेकिन हम आपको 100 के में ही बना के देंगे ये वाली बिल्ड। इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए सबसे पहले उसकी बात करता चलूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के साथ हमने प्रोसेसर यूज़ किया है वो हमने Ryzen 5 2600 प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 6 कोर और 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर जो है वो हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। इस तरह मदरबोर्ड की बात करें तो इसके साथ हमने A320 बिल्कुल बॉक्स पैक न्यू मदरबोर्ड इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 2 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है और Ryzen 5 3600X तक सपोर्ट करता है। आप इस पे जो है वो Ryzen 5 3600X प्रोसेसर भी जो है वो इस पे लगा सकते हैं। इस तरह इसके साथ जो हमने रैम यूज़ की हैं वो हमने ब्रांडेड रैम यूज़ की हैं। 16 GB रैम हमने यूज़ किया। 8 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की हैं 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली। और इसी तरह इसके साथ जो हमने SSD यूज़ की है 128 GB SSD बिल्कुल न्यू सोनी की SSD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है 1 ईयर वारंटी के साथ। और साथ ही हमने 500 GB की HDD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। 500 GB की HDD आपको 100% हेल्थ और 7200 RPM के साथ मिलेगी। और इसी तरह इसके साथ हमने 500 वाट की जो है वो PSU इस बिल्ड के साथ यूज़ की है T+ ब्रॉन्ज में। और इसके साथ जो हमने केस यूज़ किया है इस बिल्ड के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल केस हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है, जो 2K का अक्सर आप हमारी वीडियोस में देखते हैं वो केस हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। हाँ, अगर आप गेमिंग केस लगवाना चाहते हैं, जैसे ये मेरे पास ओला का गेमिंग केस इस बिल्ड के साथ पड़ा हुआ है, इसके अंदर 4 RGB फैन है, रिमोट के साथ आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इनको जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इनके जो है वो फैंस वगैरह को। तो लेकिन ये हमने जो है वो RGB केस इसलिए इसके साथ रखा है, अगर आपका बजट ज़्यादा तो आप RGB केस भी इस बिल्ड के साथ लगा सकते हैं। इसकी प्राइस के बारे में भी मैं आपको जो है वो अपडेट जो है वो दे दूंगा। नेक्स्ट जो है वो हम लास्ट में इसके ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे। तो जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो GTX 1660 Ti 6GB 192 बिट GDDR6 में ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। MSI में ड्यूल फैन में ये ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा बैक प्लेटेड। इसकी जो प्राइस है वो भी बड़ी अच्छी देने जा रहा हूँ आपको। प्राइस इनकी बताता चलूँ आपको, अब स्पेसिफिकेशन तो बता दिया आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के साथ हमने प्रोसेसर यूज़ किया है Ryzen 5 2600 प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। मार्केट प्राइस 22K तक भी चली, लेकिन हमने 20K में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। इसी तरह इसके साथ जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है A320 प्लस हमने जो है वो हीट सिंक दोनों की प्राइस ऐड की है। इनकी जो प्राइस हमने ऐड की है वो जो है वो 18K हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है। वैसे जो है वो अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो वो भी 20K में आपको जो है वो मिलेगा। अब रैम की तरफ आते हैं तो रैम इसके साथ हमने 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम यूज़ की है। 8 GB की 2 स्टिक है, टोटल 16 GB रैम हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। उसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो 9K हमने इस बिल्ड के साथ जो वो ऐड की है। 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 2666 मेगाहर्ट्ज़ भी आपके बजट में फिट आती है तो आप वो भी लगवा सकते हैं। इसी तरह इसके साथ जो है वो हमने 128 GB SSD जो यूज़ की है सोनी की 1 ईयर वारंटी के साथ 3K में हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। और 500 GB HDD की बात करूँ तो वो 2K में हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। PSU की बात करें तो 500 वाट की PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। ग्राफिक कार्ड को चलाने के लिए 8 पिन कनेक्टर इसके अंदर है, तो इसकी जो प्राइस हमने ऐड की है वो 5K यानी कि 5000 में हमने इस बिल्ड के साथ जो वो ऐड की है। नॉर्मल केस की बात करें जो इस बिल्ड के साथ 100K के साथ हम आपको नॉर्मल केस दे रहे हैं, उसकी जो प्राइस हमने ऐड की है वो हमने जो है वो 2K इस बिल्ड के साथ जो वो ऐड की है। अगर आप यही वाला ओला का गेमिंग केस यूज़ करना चाहते हैं, ये जो है वो RGB केस है, रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं आप इसके फैंस को। अगर आप ये वाला गेमिंग केस यूज़ करना चाहते हैं तो इसका मॉडल भी बताता चलूँ कि ये FG002 गेमिंग केस है। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस हम 16500 ऐड करेंगे।
अगर आप इसके अलावा कोई बिल्ड बाय करना चाहते हो, उसके साथ लेना चाहते हो, तो इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी, उसके साथ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया GTX 1660 Ti ग्राफिक कार्ड हमने 6GB 192 बिट GDDR6 में ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया 43K में। तो इस तरह ये बिल्ड जो है वो 103K में बन रही है, लेकिन हम जो है वो 100K में आपको जो है ये बिल्ड बना के देंगे। अगर आप ये बिल्ड या इसके अलावा कोई बिल्ड बाय करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर शो है, वहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे स्टोर को विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टोर पे भी जो है वो आके बाय कर सकते हैं। बाकी इनकी वारंटी की बात करें तो इसमें जो जो चीज़ें हमने न्यू यूज़ की होंगी उनकी आपको 1 ईयर वारंटी मिलेगी, और जो बाकी हमने अदर कंपोनेंट्स यूज़ किए होंगे यूज्ड में तो उनकी आपको वारंटी 15 दिन की मिलेगी। बाकी शिपिंग की बात करें तो शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी कोने, किसी भी जगह, किसी भी सिटी में जो है वो आप इसकी शिपमेंट मंगवा सकते हैं। अब लास्ट पे जो है वो आपको इसकी बेंचमार्किंग भी दिखानी है। इसी बिल्ड पे हमने बेंचमार्क भी बनाया, वो आप वीडियो के एंड पे चल के देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। Der Schuss ist abgeprallt! Scheiße! Schermen! Da sind noch mehr! Durchhalten! Wir sind in der Unterzahl. Wir können nicht gewinnen. Als Maulverräter! Sie dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Volltreffer! Noch einen Treffer überleben wir nicht. Tun Sie, wofür Sie ausgebildet wurden. Da kommen noch mehr Panzer! Er kann wieder los. Ich sehe eine Panzerfaust. Bestätigt der Treffer! Wir sind getroffen! Wir müssen in Deckung fahren. Fahren Sie uns in Deckung. Wir haben nicht viel Zeit. Wie kommen Sie voran, Kerz? Ich hab gleich. Reparaturen erledigt.
Damn, haven't seen anything like this since I was in the sandbox. Sandbags, barbed wire, observation posts. The rebels must be giving Santa Blanca hell. Bet these cartel assholes never thought they'd be spending their time dodging snipers and IEDs. Karma sure can be a bitch sometimes. I'll drive. This next track, a classic. Let's roll. From back when I was sober. It's for all you Valtas out there who have given up on sobriety and embraced a different version of truth. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. Roger that. Hey, I found a Santa Blanca medal. This'll make a nice souvenir. I think with all their money, the cartel would make a nicer medal. Due to a handful of pinche gringos that have been rolling through the countryside. If you have any info on these gringos, if you know who they work for, if they're mercs hired by another cartel, or if they're DEA, or if you see these motherfuckers, call your tip into SB Radio or post a message on La Plaga's Let's go. webpage. If your info pans out, you get a free Santa Blanca t-shirt just for calling in. And if your tip results in the death or capture of these gringos, We'll go. 10,000 bolivianos. And these pinche gringos are listening. Be afraid. All eyes find you, the entire strength of Santa Blanca is stranded down. Here comes some more of them. ¿Por qué no formar parte de la verdadera élite mundial que rige el mundo? Ten y entrénate para ganar, porque lo único que tienes es hoy. Ten y vivirás al máximo. This is Media Flores. Ya llegaron estos güeyes que Jonah la like I am, Hablan en donde vimos que estaban los enemigos. Bossy. Madonna. For me,
My mother was the first person to call me Ready? Madonna. Open fire. Then it was Copy. the other I'm engaging Tangos. boyfriends, co-workers, and let's be honest, my mother has never stopped calling me Madonna. Yes, and sweet. O sea, there are even some women out there, successful women, who want to ban the actual word bossy. But people who are satisfied being pleasant, who don't act bossy, even if they don't like the word, they don't get what they fucking want. They don't make millions of dollars a month shipping products all over the world. They don't have a hacienda or hundreds of sicarios ready to die for them. So Fire. chicas, Fire, fire, fire. Madonna. That's one tango down. You're not una cabrona? Cartel's coming down hard on the province since our last op. They're trying to make us stop. They just made a huge mistake. Mucho calor hoy por la tarde, va a ser parecido por 2 o 3 días hasta el jueves, cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si viajan las montañas y hasta el fin de semana va a ser mucho viento. Hasta mañana. Rolas, remixes, tránsitos, varo, buscas, escuadras, promos, trocas, bases, gallos, putazos. Ready? Y Fire, cabrones, fire, los fire. Engage. He's down. Engaging. Right over cage. Escuchemos disparos. Todos fugas de suya. Keep Target target down. They down. know we're here. Vamos a darles con todos estos cabrones. Los tenemos en la mira. Camina por la vida y me fatiga la corriente. Y si me mira, por mi siento. Que sigamos de espera. A partir de la madre con todo. Vamos. Get away from there. Disparen. Assholes are nothing to coming shoot this at. way. What's the plan? A ver, cabrones. Tenemos un guarda cerca. A partir de toda su pinche madre con unos buenos cañonazos.
guys and a sniper. Soy de la rebelión. Sáquenme. Hagan lo correcto. Soy yo otra vez.